Dr. Kanza Asghar, and today in this video I am going to tell you the must-haves, or you can say the essentials of skin care. That what are the essentials which you need to definitely use in your skincare routine, and they are like so much important for your skincare routine, and they are so much simple, and a lot of people are having no idea and they even don't use them on daily basis. And today in this video I'm going to tell you those simple ingredients that you need to add in your skincare routine, and it's very important for the acne prone. So let's talk about the people who are having some kind of oily skin, as गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है. अभी सर्दियाँ आने वाली है बट स्टिल अभी नहीं है, एंड राइट नाउ आई एम इन कराची. सो कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जो स्किन है उस पर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है जिन लोगों का. तो बताते चलो, सबसे पहले जो मस्ट हैव है दैट इज़ द क्लिनजर, यूज़ ऑफ क्लिनजर. और आपके क्लिनजर में एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो गया, एजेलिक एसिड हो गया, लैनिक एसिड हो गया, बेंजाइल पेरोक्साइड हो गया. लाइक दीज काइंड ऑफ एसिड्स, कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक इंग्रेडिएंट आपकी क्लिनजर में होना चाहिए. Then the second product is the face wash. आपका face wash is a very important ingredient जो कि आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, और आपने उसको लाजमी ऐड करना है. उसके अंदर भी जो एक्नी प्रोन पेशेंट्स हैं, जिनकी एक्नी होती है, दाने हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वो कोशिश करें कि आपके फेस वॉश के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो गया, लैनिक एसिड हो गया, एजेलिक एसिड हो गया, दीज काइंड ऑफ एसिड्स. तो आप अपना जो है मेडिकेटेड फेस वॉश इस तरह से चूज कर सकते हैं, एंड आपने ट्वाइस सुबह शाम यूज करना है. देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट विच यू कैन नेवर मिस गोइंग आउटसाइड एंड इवन इफ यू आर स्टेइंग इनडोर्स, इट इज सनस्क्रीन. आपने लाजमी सनस्क्रीन आफ्टर द मॉइस्चराइजर अपने फेस के ऊपर यूज करना है, और ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिपीट योर सन ब्लॉक और सनस्क्रीन आफ्टर एवरी 2 to 3 hours, बिकॉज 2 से 3 घंटे के बाद उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है. So this was the third one, and the most important thing which you can add at night is the use of retinol. Retinol is a very powerful antioxidant. It's a vitamin A derivative, and it is having very powerful anti-aging properties. So why not to choose such a product which is having so much amazing results on your face, and which is actually working on your skin? So why not to go for that? And rather than like wasting a lot of money on a lot of expensive ingredients, just don't do that and stick to this simple skincare routine, and you are giving your skin all the things which your skin want. Number 1 is the cleanser, second is the face wash, third is the moisturizer, and the fourth is the use of retinol, which you can add or which you can mix your retinol with your night care skincare routine, with your नाइट क्रीम. जोन सी भी आप नाइट केयर में जो आप अपनी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप जो रेटिनॉल है वो सीरम की फॉर्म में भी 2-3 ड्रॉप्स ऐड करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ अपने स्किन केयर में. So hope so आज की वीडियो, it was short but it was sweet and simple, and it was so important for a perfect, good looking and healthy skin, for a radiant look, because that retinol is definitely going to give you that flawless glowy look, and it is actually a very powerful anti-aging product. So hope so you like this video, and if you like this video, give this video a thumbs up and do subscribe to the ZachaBacha channel. दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.